अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एग्ज़ाम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो वीडियो का सिलसिला भी शुरू करते हैं। करेक्टर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल का करेक्टर देखते हैं आज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ ए रिनोम्ड नेम इन द वर्ल्ड ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। द लेडी विद द लैम्प इसको कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है ये आगे जाके देखते हैं। ओपन हर आइज ऑन May 12th 1820 in Florence. She belongs to a very wealthy family. She is considered as a towering figure of the Victorian era because of her sincere efforts in gathering statistics, reforming social problems, and most importantly, she revolutionized and secularized nursing. Nightingale was awarded with the giant prize of $250,000 from Queen Victoria, which she used to open a training school for nursing, known as Nightingale Training School for Nurses in St. Thomas Hospital. Nightingale breathed her last on August 12, 1910 in London. Okay. Nightingale's services in Crimean War. As already mentioned, Florence Nightingale is remembered with the title Lady with the Lamp because she was identified as a true nurse after she practically rendered her services to the war-stricken soldiers. अब इसको क्यों कहा जाता है लेडी विद द लैम्प? जब इसने क्रीमियन वार में अपनी सर्विसेज अंजाम दी थी तो इसकी वजह से इसको लेडी विद द लैम्प का टाइटल मिला था। ड्यूरिंग क्रीमियन वार almost 18,000 English soldiers were admitted to the English military hospitals where health and sanitary conditions were in their worst conditions. तकरीबन 18,000 सोल्जर्स एडमिट हुए थे हॉस्पिटल्स में जब वहाँ पे सेहत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ठीक है, सहूलियात नहीं थी हॉस्पिटल्स में। Nightingale was asked to arrange a group of female nurses, so she sailed to Constantinople with almost 3 dozens of nurses to fix the dismal situation there. नाइटिंगेल को कहा गया कि वो फीमेल ग्रुप इकट्ठे करें नर्सेज की और वहाँ पे आए। तो 3 डजन नर्सेस के साथ नाइटिंगेल वहाँ पे चली जाती है। ठीक है। She had ordered her team to bring numerous scrub brushes that ceiling walls and floors will be cleaned from bacteria. तो ये अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि कुछ स्क्रब ब्रशेस ले आएँ जिनके ज़रिए बैक्टीरिया को साफ़ किया जा सके। Okay. She used to visit the sick soldiers in the evening by carrying a lamp to see how things were going. Soldiers were greatly moved by her compassion and titled her with Lady with the Lamp and Angel of Crimea. Her untiring efforts decreased the death rates to 2/3. ओके, ये क्या करती थी कि रात को जाती थी इंजर्ड सोल्जर के पास एक लैंप लेकर उनको देखने के लिए। ठीक है, तो वो जो सोल्जर्स थे वो इसके अनटायरिंग एफर्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको लेडी विद द लैम्प का टाइटल दिया। ठीक है, अब इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। लिटन स्ट्रेची has exerted both strength and weakness of the lady to make her a human of flesh and blood। ठीक है, उसकी weakness भी बताता है, strength भी बताता है। There is no doubt she was a self-sacrificing woman and she was very brave, but at the same time she used to flare up to over trivial matters। क्या थी, शॉर्ट टेम्पर थी, गुस्सा बहुत आता था इसको छोटी छोटी बातों पर। अब biography डिवीजन है। लिटन स्ट्रैची हैज़ डिवाइडेड her biography into 5 parts. Okay, the first part mainly covers Florence Nightingale early life when Nightingale cousins were engaged in dancing parties, but she excessively wanted to be a nurse because her aim of life was to serve the people। बहुत पहले से ही ये नर्स बनना चाहती थी। ठीक है, the second part deals with the fierce adventure in the Crimean War, जो पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, जब 18,000 इंग्लिश सोल्जर्स एडमिट हुए थे और इसको क्या था, लेडी विद द लैम्प का अवार्ड भी मिला था सेकंड पार्ट ऑफ हर बायोग्राफी में। द थर्ड पार्ट ऑफ हर बायोग्राफी डिपिक्ट्स हर एंशियस डिज़ायर टू रिफॉर्म मिलिट्री हॉस्पिटल्स एज वेल एज सैनिटरी कंडीशंस। देयर वर एनॉर्मस प्रॉब्लम्स
but she gradually won her victory over it, but with the cost of her health. ठीक है, इसने विक्ट्री तो हासिल कर ली थी लेकिन अपनी सेहत को ख़राब कर लिया था अच्छा खासा. When a doctor advised her to take rest, she replied bitterly, I am lying without my head, without my claws, and you all peck at me. The fourth part shows Nightingale's victory in philosophy and religion. She detected many faults in church and presented her points to fix those mistakes. Strachey satirically notes she seems hardly to distinguish between the deity and the drains. Okay. The fifth and the last part shows her last years when the thin lady grew fat, smiling all day long. Mr. Strachey says the brain which had been stilled at Scottery was indeed literally growing soft. He says that at the time of Crimean War, her brain was very sharp, very intelligent, but now it is going to grow soft. Okay. Conclusion क्या है? The crux of the above discussion is that Florence Nightingale was a brave lady. She fought with the worst conditions of her age and tried to reform them. She performed a vital role as a nurse and gave a new life to the death close soldiers, due to which she got the title of the Lady with the Lamp. गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी. मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आए और बार बार उर्दू लैंग्वेज में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. ठीक है, अगर इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं. इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी. इजी लैंग्वेज होगी. ठीक है, आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प देगी. ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. गुड बाय.